मैं आज आपका होस्ट हूँ इस पर्टिकुलर एडवेंचरस जर्नी पे, जो कि क्लाउड लर्निंग पे होगी। मैं आने वाले टाइम में ऐसी ही सीरीज़ डालता रहूँगा जिसमें जो भी मेरे फ्रेंड्स क्लाउड के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं या फिर गाइडेंस चाहते हैं, दे कैन वर्क विद मी और मैं उनके साथ काम करके इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँगा। और बिफोर मूविंग टू आवर एजेंडा टुडे, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि आपका सपोर्ट से हम इस चीज़ को आगे ले जा सकें और आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट आपको शेयर कर सकें। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट नाउ। So, first of all, let me tell you about the OCI fundamentals. OCI is Oracle Cloud Interface, which is basically एक Oracle का एक hyperscaler है. Those who don't know, hyperscaler is basically the current technologies which every vendor is taking care. जिसमें आपको एक रेंटल बेस्ड कंप्यूट सर्विसेज या कोई भी सर्विसेज जिस आईटी रिलेटेड आपको रेंटल बेस मिल जाएंगे, एंड यू नीड टू चार्ज, यू विल बी चार्ज अकॉर्डिंग टू द यूसेज. सो लेट मी टेक यू टू द एजेंडा. सो आज की वीडियो में आज हम ओरेकल क्लाउड के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके रीजन्स, एक्टिव availability domains, fault domains, compute, storage, networking, IAM, demo and question and answer. ये आज हम करेंगे. So guys, going through to very first agenda point, the introduction. Oracle Cloud Infrastructure is basically third most used Oracle cloud services out there in the market. Oracle ने रिसेंटली काफ़ी ग्रो किया है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, एंड दिस इज समथिंग विच कम्स अप एज अ द वन ऑफ द लीडिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म. और इसके अंदर आपके 29 रीजन हैं, 6 एश्योर के इनके डायरेक्ट कनेक्शंस के रीजन्स हैं, और हर एक रीजन्स में 3 अवेलेबिलिटी जोन रहते हैं बेसिकली. और हर रीजन में अवेलेबिलिटी डोमेन का, इफ़ यू सी द व्हाट मीन बाय अवेलेबिलिटी जोन इज बेसिकली व्हेन यू से रीजन इज बेसिकली physical data center in a particular location. For example, Mumbai. So they have a region in Mumbai. That means Mumbai will have a couple of availability domains. That means the physically separated data centers within the particular region. So Mumbai gonna be the region, or for example 100 किलोमीटर की दूरी पे मुंबई में 2-3 डेटा सेंटर हैं, and they will be named as availability domain. So अगर आप देखोगे इसमें फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका टू साउथ, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया, मुंबई, सो आपको हर जगह इसके फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं. दैट्स रियली गुड. सो इसके अंदर आपको कमर्शियल हैं, कुछ प्लान हैं ऑलरेडी फॉर फ्यूचर, फॉर कुछ गवर्नमेंट हैं, कुछ एश्योर इंटरकनेक्ट हैं. They would stand up with Azure. So Azure connections connected भी हैं इसके अंदर. So let's go to the next slide. So as I told you, like availability domain is a physically separated data center in the region. और जो फॉल्ट डोमेन रहता है वो इज अ पार्ट ऑफ अवेलेबिलिटी डोमेन. हर एक अवेलेबिलिटी डोमेन के अंदर 3 फॉल्ट डोमेन रहते हैं. व्हेन यू से द फॉल्ट डोमेन, इट्स बेसिकली लॉजिकल सेपरेटेड डेटा सेंटर. फॉर एग्जांपल, डेटा सेंटर बहुत बड़ा होता है और आप एक डेटा सेंटर के फेलियर को बहुत रेयर माना जाता है. रीजन तो बहुत ज़्यादा रेयर होता है. फॉर एग्जांपल, अगर मुंबई में अगर कुछ कोई बाढ़ या कुछ अर्थक्वेक ऐसा कुछ आ जाता है, तब भी पूरा रीजन डाउन होने के चांस बहुत कम रहते हैं, बहुत कम रहते हैं.
और एक अवेलेबिलिटी डोमेन भी अपने आप में एक पूरा डेटा सेंटर है, और इसके अंदर भी फॉल्ट डोमेन अगर कई हो रहते हैं तो इसका बेनिफिट यही रहता है कि आप अपने एप्लीकेशंस को डिफरेंट डिफरेंट फॉल्ट डोमेन में यूज़ कर सकते हैं। फॉल्ट डोमेन का ये होगा कि अगर आप डेटा सेंटर को आप अवेलेबिलिटी डोमेन कह रहे हैं, तो फॉल्ट डोमेन कैन बी, नॉट सेइंग it will be, can be a rack. So you can define the particular rack or couple of racks as a fault domain कि 1 से 12 के रैक हैं, अगर 1 से 12 रैक हैं टोटल डेटा सेंटर, तो they have divided into 4 so that the physical separation of the data within the data center can happen, so that कोई भी चीज़ उसके अंदर फेलियर हो, it will not gonna be impacted the availability domain और आपकी एप्लीकेशन को भी नहीं। तो एक ग्रैनुलैरिटी है फॉल्ट डोमेन Oracle क्लाउड के अंदर, दैट्स अ गुड थिंग। सो अगर आप देखेंगे द रिसोर्स दैट प्लेस इन फॉल्ट डोमेन विल नॉट शेयर द सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सो और ये फिजिकल रैक स्टैक टॉप स्विचेस पावर डिस्ट्रीब्यूशन, दैट विल इट गonna be the different. So when you come upon the OCI compute services, so OCI compute services में देखा तो इसमें bare metal servers हैं। When you say the bare metal, basically a raw server. When you say raw, that means rack mounted server जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, and you will be adding all the virtualized VMware or the Red Hat or Oracle Linux, whatever you want to do, you can do that. Dedicated virtual host is basically for certain for example, the app container or the operating system, they have like certain virtual machine gonna be working on certain application. So that's it, that's the main funda of the dedicated virtual host. It can be reserved for a certain period of time, and the virtual machine is normal, which basically run the operating system, language, runtime, application containers, code, whatever you want to do on that. Containerizer is the Kubernetes is the one of the example of that, or basically containerized based application. And the last but not the least, the functions, which is like serverless architecture in nature. And when you say the serverless architecture, it basically help you to deploy your function without without the need of the base server. So you just run the code and you can run your program without requiring a baseline server. So स्टोरेज में अगर आप स्टोरेज देखेंगे, स्टोरेज बहुत वास्ट एक वास्ट द प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप की स्टोरेज के बारे में पता लगेगा। और OCI के अंदर ब्लॉक स्टोरेज है, NVMe है, फाइल स्टोरेज, ऑब्जेक्ट स्टोरेज, आर्काइव स्टोरेज। नेम सजेस्ट करता है ब्लॉक स्टोरेज बेसिकली द बूट द बूट वॉल्यूम्स, लोकल NVMe द SSDs, फाइल स्टोरेज समथिंग which is like Samba, and object storage is like S3 bucket sort of thing जिसमें आप object की तरह सेव करते हैं। It don't have any sort of hierarchical based structure. Basically it will contain the object based files. Archive basically for archiving your data to a longer term of time. अगर आप देखोगे इसमें तो OCI स्टोरेज सर्विस के अंदर जो लोकल NVMe, ब्लॉक वॉल्यूम, फाइल स्टोरेज और ऑब्जेक्ट स्टोरेज, आर्काइव स्टोरेज, ये पूरा एग्जांपल है। अगर आप वीडियो को रोक कर इसको आप रीड करोगे तो इट विल बी गुड फॉर यू। तो one of the base thing which is the block storage is like SAN based, and block volume is local NVMe, and local volume is basically SAN based, and file storage basically a file or Samba. For example, for file storage is basically NFS v4 or v3. What are the compatibility of file system is basically shared file system, just like आप अपने Windows के अंदर शेयर करते हो वो उस file system का। ऑब्जेक्ट स्टोरेज ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज आती है इसके अंदर। इट कुड बी ट्रीट एज जस्ट लाइक वी हैव लाइक गूगल ड्राइव्स एंड ऑल दैट, सो दे उसके अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हो। एंड यू कैन जस्ट पोज दिस वीडियो एंड यू कैन सी द डिफरेंट पॉइंट्स ओवर हियर। एंड over here the Oracle Cloud में Oracle Cloud Network VCN is a term which basically a virtual cloud network
In AWS term, we call it like virtual private network. Is the same like a software defined networking, and which certainly enable the instance to securely communicate with the internet and the instance on-prem database, whatever you want to do. So ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग है जो आप अपने सेटअप के अंदर डिप्लॉय करते हो. Once you do that, it will be treated as a like a switch sort of thing, कि जिसके अंदर आपके नेटवर्क कनेक्टिविटी वगैरह आप उसमें ले सकते हो. आप उसमें आप पोर्ट्स ले सकते हैं, नेटवर्क पोर्ट्स ले सकते हैं. यू कैन गिव द सर्टेन VLANs to it, and you can whatever the range you want to do it, you can do and define and go on with your project. Identity management basically the RBAC sort of thing है इसी में ही, कि इसमें आप certainly group users और आप ग्रुप्स और पॉलिसीज डिफाइन कर सकते हो. आप आई एम यूज़र बना सकते हो. यू कैन डिफाइन द पॉलिसी, यू कैन अज्यूम रोल्स एंड सॉर्ट ऑफ थिंग. सो ये बेसिकली आपका द यूज़र नेम क्रेडेंशियल्स वाला जो कंसेप्ट रहता है, ये वही है. तो आई एम लाइक आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट इज द टर्म which is basically similar in AWS and sort of Azure as well. सो इसका मेन पर्पज़ यही है कि आपके अकाउंट में, आपके Oracle अकाउंट में, you can create the group and you can use the Python or any API based query with the user and password. You can use the tokens, create the deploy your environment sort of thing. So जो ओवरऑल क्लाउड का जो भी कंसेप्ट है OCI का, it basically same like just give you an example. हर कोई क्लाउड टेक्नोलॉजी को काफ़ी हाइप में, it has everything, it has nothing sort of, because when we start our journey from a bare metal server, from if you say Oracle, IBM or any other servers, so उस टाइम से अब तक the thing change, which is like time to deploy the infrastructure, and everything comes within this technology. क्योंकि in early 90s or 2000 first decade of the century, user need to deploy the server. It will take them like 5 to 6 months for procuring, deploying each and everything, setting up, and again the scalability is something which is not in their hand. क्योंकि आप जब तक आप जिस टाइम तक का आपने प्लान किया होता है स्केलेबिलिटी का, वो टाइम जब तक डिप्लॉय करता है वो हो जाता है. एंड अगेन एज सुन एज यू डिप्लॉयड द एनवायरनमेंट, देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर एनहेंसिंग इट. सो वो उसमें you stuck yourself with the certain position, और वो is not good for any organization. So इसके लिए आपके मन में जो भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, यू कैन सर्टेनली राइट डाउन टू मी, कमेंट डाउन. और आपको जो क्लाउड में, डेवऑप्स में या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी में आपको इंटरेस्ट हो, या इफ़ यू वांट टू have me to put something or some video on that particular thing, just let me know. I'll be happy to do that. Thank you guys, thank you so much. See you around.